clean, in which 55 liter of water supply per capita per day निर्धारित किया गया, and it goes for a long term basis, and it also makes under the जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का ये कंपोनेंट था मित्रों, से आप याद रखेंगे फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे। And then Swachh Bharat Mission Gramin, in which the sanitization as well as ensuring the dignity of women living in the villages was ensured by providing separate and clean toilet in the villages, started at 2nd October 2014. So with more than 10.86 crores of toilet, so how much of toilet it builds? 10.86 टॉयलेट्स बनाए गए in order to avail cleanliness and sanitization under Swachh Bharat Mission, which also act as a protection measures to curb the COVID pandemic situation। तो जहाँ पे स्वच्छता रहेगी वहाँ पे बीमारियाँ दूर रहेंगी, मक्खियाँ कम आएंगी और कम्युनिकेशन होने से किसी भी डिजीज़ को बचाया जा सकता है। Then rural development measure was done under the प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के फर्स्ट कंपोनेंट के अंतर्गत प्रोवाइडिंग दी हाउस होल्ड, यानी कि ग्रामीण वैसे घर जो कच्चे मकान बने रहते थे गांव में, तो उनके लिए पक्के मकान की सुविधा सरकार की फंडिंग के द्वारा इंश्योरिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट्स टू एवरी विलेजेस लेवल वाज इंश्योर्ड अंडर दी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, and 1 crore household were taken up since 2018-19 in the first phase, and under phase 2 assistance of being construction for 1.95 crore of houses in 1920, यानी कि 1.95 करोड़ हाउसेस पहले चरण में 1 करोड़ घर बनवाए गए पूरे देश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों को हटा के। इन सेकेंड फेज 1.95 करोड़ हाउस होल्ड बनाए गए। नाउ दिस कन्वर्जेंस विद द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑल्सो एड्रेस द बेसिक नीड सच एज, अब ऐसे मकान में बनने के बाद फिर वो व्यक्ति अलग से परेशान होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, सैनिटेशन चाहिए। Then government also included this scheme interlinking with the other scheme providing basic needs such as pipe drinking water supply, then electricity connection, also LPG connection and Swachh toilets। So remember this fact that प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत घर तो बनाए गए ही, साथ साथ घर में लोगों के लिए क्लीन टॉयलेट, देन इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी सप्लाई and electricity, LPG and 90 to 95% per day of unskilled labor from मनरेगा, यानी कि 90 से 95% पर डे का रोजगार भी दिया गया। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने वल्नरेबल सेक्शंस को एज ए क्यूशन मेथड टू ग्रैब द नीड्स ऑफ चैलेंजिंग अंडर कोविड पैंडेमिक सिचुएशन, उनको बचाए रखने के लिए क्यूशन दिया और उनके लिए हाउस होल्ड बनाए गए, उनमें इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, वाटर सप्लाई सारे सुविधाएं प्रोवाइड की गई और साथ में जॉब भी प्रोवाइड किया गया। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू इम्प्रूव रूरल कनेक्टिविटी टू द विलेजेस, गवर्नमेंट प्रिवेल्ड मोर एंड मोर रोड्स टू द विलेजेस एंड डिस्टेंट लोकेलिटीज विथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी एंड नेसेसरी कल्वर्ट्स, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, यानी कि सड़कों के आसपास जल जमाव की जो समस्या होती है उसके लिए भी क्रॉस ड्रेनेज एंड ग्राम सड़क। जो आप कभी भी रूरल एरियाज में ट्रैवल करते होगे तो आप देखते होगे कि सड़कों के आसपास बोर्ड लगे रहते हैं एंड दैट शोज द इंडक्शन ऑफ दैट रोड की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क निर्मित की गई है इस डेट में, और इसके साथ साथ ये फैसिलिटीज़ ड्रेनेज की, इलेक्ट्रिक सप्लाई की,
और ये सारी सुविधाएं दी गई हैं to connecting the household and markets of the rural areas also. Now next is the multi-dimensional poverty. Multi-dimensional poverty is also talked in the sustainable development goals, यानी कि वैसी poverty जो कि बहुत सारे कारणों से समाज में उत्पन्न होती हैं. That is also a part of global multi-dimensional poverty index MPI and the Niti Aayog data also, and which was taken by the National Family Health Survey 4. Remember that multi-dimensional poverty index is also being discussed in the NFS National Family Health Survey data 5 also, but the economy survey is talking about NFSH 4. ये 5 के डेटा को नहीं ले रहा है मित्रों, remember this. And simultaneously it is also connecting the data with the Niti Aayog analysis and the multidimensional poverty index at global level. So in all the states and districts of India, it caters the poverty situation with the 12 indicators. 12 indicators के द्वारा ये multidimensional poverty situation को analyze कर रहा है. Poverty situation at districts levels, यानी जिले स्तर पे और राज्य स्तर पे ये मेजर्स जो लिए गए हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, उनको ये काउंटर कर रहा है, उनको शो कर रहा है और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा एनालिसिस कर रहा है. नाउ पॉवर्टी रिफॉर्म टू इनेबल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी. सो प्रोसेस रिफॉर्म्स जो लिए गए अनसर्टेनिटी को काउंटर करने के लिए, सिंपल रेगुलेशन कंबाइंड विथ ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो सिंपल रेगुलेशंस किए गए, लिबरलाइज्ड किए गए रेगुलेशंस को, एंड देयर वाज रिफॉर्म्स मेड अंडर द रेगुलेशंस टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. देन सेकेंड वाज टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड सुपरविजन. तो क्या किया गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी गई in system to inculcate the values of good governance. क्या कर दिया गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई, पारदर्शिता लाई गई इन द सुपरविजन. देन स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ एक्स एंड अकाउंटेबिलिटी सच एज बैंक बोर्ड्स. और क्या लाए गए, बैंकों के लिए बैंक बोर्ड बनाए गए. देन नेक्स्ट वाज एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. अगर कुछ इंसॉल्वेंसी और वैसे कुछ प्रोसीजर्स इनकर हो रहे हैं, देन देयर शुड बी एक्स पोस्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म. रिमेंबर दिस फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ let us look at the questions which arise out of this chapter for your mains point of view. So informal workers in rural India have been hit most due to pandemic. So informal worker हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा है ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन. तो इनफॉर्मल वर्क्स क्या हैं मित्रों, छोटे मोटे उद्योग जैसे हथकरघा और बीड़ी बनाना, कोई डाली बनाना, कोई छोटे मोटे काम जो करते हैं कारीगर, तो वैसे कारीगरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई. इन दिस कंटेक्स्ट इलेबोरेट द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर रूरल इकोनॉमी. तो इनफॉर्मल वर्कर्स ने जो रूरल इकोनॉमी में काम किया, तो उसे आप कैसे लिखोगे. नाउ स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन बाय पुटिंग द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज द इनफॉर्मल सेक्टर. इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर क्या है. Then write in the body details of plans and policies made for the informal sector, stating the challenges faced by informal sector. Now also write how government took several initiatives in order to cater and balance the need of informal sector in the COVID pandemic situation. In the conclusion part, conclude with more ideas and way forward for the informal sector upliftment.
Now, next is Corona crisis have made a long-lasting impact on the education sector. Education sector पे long-lasting impact COVID के through देखने को मिला. And what happened, friends? Many students were not able to go to school, not interacting with the teachers for 2 years, having sitting on online mode in their house. So their creativity, their intelligence was quite suffering during the pandemic situation. So in the light of new education policy, now you see the core of the question, new education policy, discuss the need for a comprehensive plan for education sector in India. Start the question with introduction of education problems and what is the present scenario of education. Then in body, describe about the initiative taken by government via new educational policy, and vis-a-vis also write the pros and cons. Then in conclusionary remark, add the way forward and what is the lagging behind this measure, that is new education policy लागू करने के बाद भी कुछ चीज़ें बच रही हैं, तो वैसी क्या चीज़ें आप चाहते हो कि शिक्षा पद्धति में शामिल की जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था को और भी रोबस्ट और रेजिलिएंट बनाया जा सके. Now, so I hope that this lecture was quite well. Still, I want to discuss some more facts with you. That is private investment which make the key driver of the economy during pandemic situation. So ये additional facts मैं आपको दे रहा हूँ for taking the class at Empower IAS. So first is the fulfillment of 5 trillion economy which requires 8% growth. Next is growth can be sustainable and shifting to create a virtuous cycle of saving investment and exports supported by favorable demography. डेमोग्राफी को कैसे इकोनॉमी सर्वे देख रहा है इम्प्रूव करने के लिए, जो कि हम बजट सेशन में ऐड करेंगे. देन नेक्स्ट इज की इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्चुअस साइकिल nourishing MSME data as public goods, behavior changes and legal reforms. That again plays an important role, MSME policies, then behavioral change and legal reforms. Now, next is human and visionary policy reforms for transformed life and livelihood for the life of millions. तो सरकार के द्वारा लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए क्या विजनरी रिफॉर्म्स लाए गए मित्रों. देन फर्स्ट, इंडिया फोकस ऑन सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड, जीवन की रक्षा करना और रोजगार की रक्षा करना was the first target. Short term pain for the long term gain. Then second is GDP growth to be maintained and has lost human life cannot be brought back. So GDP growth तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर जो जिंदगियां चली गई हैं पेंडेमिक में उन्हें आप वापस नहीं ला सकते. Then only country to announce a slew of structural reform. India was the only country in the world to prescribe such reform which were discussed in the pandemic situation, in health, in hygiene, in employment and education. Then calibrated demand and policies, demand side policies push the acceleration only when the brakes are removed. So ऐसी डिमांड साइड पॉलिसी बनाई गई कि लोगों में कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर तक पहुंच सकें. दैट वेयर by increasing logistics supply and chain and good infrastructure, supply chain and holistic infrastructure. Then next is V-shaped economic recovery without second wave marks India as sui generis case in the mature policy making. तो इंडिया की इकोनॉमी पहले डाउन हो रही थी and it come back by making a V-shaped recovery. That again make a huge leap for policy makers. And sixth is the mega vaccination drive should enable recovery in the services.
बहुत सारी vaccination drive, that was first phase of vaccination, second phase of vaccination, then booster vaccination, which caters the health surplus of the India's robust health system. India's sovereign credit rating does not reflect its fundamental. So credit ranking from Moody and MCRI, यानी कि बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो रेटिंग दे रही थी, जिनमें हमें लग रहा था कि हम लैग कर रहे हैं, बट स्टिल दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी. दैट वाज BBA3 and BBA. At several parameters, India was high, and general government debt in percentage was reducing. So we can see that average rating of that was Moody or Finch rating. So Moody rating and Finch rating जो agencies दे रही थी, that show a growth tendency throughout the period of India's highest growth. So it is rising from 2.2% to around 2.9%, which shows that India is having a political stability, India is having a rule of law, India is having control over the corruption. भ्रष्टाचार कम हो रहा है भारत में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहे हैं, देन शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट वो भी रिड्यूस हो गया, देन रिजर्व एडुकेसी रेशियो ये भी कम हो गया, एंड सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री इज ऑल्सो काउंटर्ड. सो इंडिया शोज अ कंसिस्टेंसी इन द रेटिंग. Then healthcare takes center stage finally. Healthcare was quite improved in comparison to Vietnam, China, Thailand, which were competitive countries, but Bangladesh was shown a good tendency in comparison to India. India is having 63 health expenditure data. Remember this fact for your prelims. Regulatory forbearance and emergency medicine and not stable diet. So GDP growth and start of forbearance was shown. There was a decline in 2009, forbearance take withdrawn here, then again decline, again recovery. So we see that there was a W-shaped curve, which economic advisor was talking in his delivery speech of first day of economy survey presentation. Then in second graph we see export rising in terms of India's forbearance was high and forbearance should have been withdrawn. It is asking that forbearance in the middle of the economy should have withdrawn, but it was again rising and end of forbearance is here. So forbearance की क्षमता यहाँ कम होगी, then it shows a negative graph at the end. Then that means that export was declining in 2020. Then start of forbearance again in 2005 for index of industrial production, then again decline in 2009, again rise and again fall. That means 2020 index of industrial production also declined due to pandemic situation. Credit growth again rise, then again continuously fall in 2020. That means that India was doing quite well despite the pandemic challenge lead to decline of export and manufacturing. Now thrust on private investment in research and development sector lies India's potential. So government sector shows this more than half of the chart is 56, and business sector shows 68 part of this graph. So business sector and India has been R&D of 37% with the business end of top 10 economies of the world, that is 68% on an average. So India was having good business environment, that again reflect in the graph itself which we are looking here. कैसे ग्राफ शो कर रहा है कि ease of doing business अच्छा था because it has 68% of average. Then government contributes 56% of the gross expenditure on R&D, and India's gross expenditure of R&D at 0.65% of GDP is
low primarily because of the disproportionately low contribution from business sector. Initially it was 0.65 but it improved to 68% due to the disproportionate distribution. Then despite more liberal tax incentive for R&D in India compared to the top 10 economies, India is having robust R&D system now. Now Ayushman Bharat graph shows that there was family health survey 4 which shows 24 and there was 54% growth. That shows a graph of 36 in National Family Health Survey 5 data. Then in Pradhan Mantri Jai Yojana, adopted state and non-adopted state. So non-adopted states are those states which are not taken part in Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and their ratio was declined to minus 10%, rested at 45. Shows that improvement in coverage of health insurance and financial schemes. Now, improvement in the insurance coverage leads to improvement in health insurance. अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेते हैं तो उनके अंतर्गत क्या बढ़ता है? फर्स्ट, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इम्प्रूव होती है. Then maternal and child health also improved. Then treatment of childhood diseases again improving. Child vaccinations improvement. Awareness of HIV AIDS among adults, that is a part of spillover effect. These all problems are curtailed by taking the insurance coverage. Now similar results seen for West Bengal, in adjoining states Bihar, Sikkim and Assam. Now improved equitable access to the basic necessities across the states. तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेसेसिटीज़ मूलभूत सुविधाएं कहाँ कहाँ पहुँचाई गई हैं? As you can see in the map, states of UP, Bihar and Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Odisha, Telangana and West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Tripura are having the facilities improved at that having below 0.50 of basic necessities. यानी कि ये सारे राज्यों में मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है. That is again a problem and challenge for the policy maker, which you could add in your answer writing. Now in 2018 it improved to below 0.50 states, Jharkhand, Odisha and West Bengal, and improvements seen in the state of Rajasthan, UP, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and Assam, Arunachal Pradesh, which were earlier struggling. So ये सारे states अब improve होते हुए दिख रहे हैं in 2018 data. So bare necessities also improved. Access of water, housing, sanitation, microenvironment and other facilities improved in the year 2018 as compared to 2012. That again makes a huge leap for the cities as well as rural population. Then second is improvement in access seen to all states in the country. Housing access was providing to all the states as well as the bare necessities. Third is interstate disparity in access of the bare necessities decline. यानी कि अंतरराज्यीय जो कंपटीशन था मूलभूत सुविधाओं के रूप में वो काफ़ी कम हुआ. That was declined. Then access improved disproportionately more for poorest household compared to richest household. सबसे गरीब जो घर वाले हैं उनके कंपैरिजन में रिचेस्ट हाउस होल्ड का जो पैरिटी था वो भी इम्प्रूव हुआ. यानी उनके बीच में जो इनइक्वालिटी थी वो भी रिड्यूस हुई है. देन इम्प्रूवमेंट इज द बेयर नेसेसिटीज लीड्स टू हेल्थ इंडिकेटर्स. तो हेल्थ सुविधाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं. देन
Next is improved access correlates with the future improvement in education indicators. Now education indicators भी बहुत improve होते हुए दिखे हैं. Now in this way I feel that you understand the economy survey quite well and get the data, make the notes for your prelims as well as mains point of view. So ending this lecture, I believe you enjoy the economy survey, and we will meet in the next series of economic budget for this year 2022-2023. So thanking you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.